So till now we have performed two operations practically by using alter command, and these two operations were, first one was uh, how to add a single or multiple columns to an existing table. And the second operation that we have performed by using alter command was how to set a default value for an attribute to an existing table. Now moving further, the third operation is modify an existing column. So modify an existing column. So there are two things important with this one. In modifying existing column, you have to modify the data type of a column, or you can modify the size of a column. So syntax is given over here: alter table, table name. So here modify keyword will be used, then column name, data type and size. So here is an example. I'm just copying this example and pasting my SQL workbench. So alter table patient. Alter is a DDL command, table is a keyword, patient is the name of existing table, and modify is a keyword. Modify keyword is used to modify the data type of an attribute, or even you can modify the size of an attribute. So the previously the data type of address attribute was varchar. Again it is varchar. You can even now set its data type as char as well. So previously the size of this attribute was 200, and now we are setting the size at 300. It means we are modifying the size of this attribute. Previously it was 200, and now we are changing the size from 200 to 300. Just select the query and click on execute button. So query has been successfully executed, and the effect will be applied permanently to an existing table structure. If you want to see, you can use describe command. So here address attribute, data type is varchar, and now you can see that size is 300. So by using alter command, you can modify the size of an attribute. Even you can modify the data type of an attribute. Even by using modify keyword and alter command, you can modify multiple columns at the same time. Syntax is given here, and here is an example: alter table patient, modify father name varchar 70, modify mother name varchar 70. Previously the size was 60 for both the attributes, and now we are going to change the size from 60 to 70. I am also executing practically in workbench and this example. So just copy and paste over here in MySQL workbench. So again I'm telling you that alter table patient, modify is a keyword,
Then father name is an existing attribute name. Then the type or you can say data type of this attribute, that is varchar, and we are changing the size. Okay, again comma, and again you have to use modify keyword once again. It means if you are going to change or modify multiple columns, then you will use modify keyword with each and every attribute separately. So I'm just selecting this query and click on execute button. So again the query was executed successfully, and we are seeing the effect by using describe command, describe patient, और हम चेक करेंगे कि क्या वाकई जो है फादर नेम की साइज जो है 70 हो चुकी है और मदर नेम के अंदर भी साइज जो है 70 हुई है या नहीं. So just selecting the query of describe patient. So here is effect, which is a permanent effect. So father name, data type is varchar and size is 70. Mother name, sorry, mother name, a name of attribute is mother name, and data type is varchar and size is changed from 60 to 70. So you can change the size or change or modify the multiple columns as well. जिस तरह से हमने मल्टीपल न्यू कॉलम्स ऐड किए थे, सिमिलरली you can modify multiple columns by using alter command. But one thing is important: if you are going to change the data type or you are going to change the size of data type, then you have to use the modify keyword. इस पर्पज़ के लिए आप लोग जो है वो modify keyword का ही यूज़ करोगे. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू. आपसे एक्सटर्नल पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर टेबल के अंदर डेटा एग्जिस्ट कर रही हो, तब भी क्या हम एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या एट्रीब्यूट का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं? क्या एट्रीब्यूट की साइज चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज complicated because it depends upon situation. For example, here father name is an attribute name and its data type is varchar and size is 70. So if data is available, you can change the data type varchar to char, and you can change the size as well. But for example, अगर हम कहें कि फादर नेम जो है वो एग्जैक्टली 70 कैरेक्टर्स तक का है और अगर हम साइज चेंज करें 35 में, तो इससे क्या होगा कि इससे जो है वो एक तो ये होगा कि डेटा लॉस हो सकती है या में भी एरर जनरेट हो. ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो इन पॉसिबिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए हम जब डेटा इंसर्ट करेंगे तभी हम ये चेक कर सकते हैं. सो टिल नाउ वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव these conditions. When we will use insert command, then we will prove these conditions, that we can change or modify the size or data type of an existing attribute if there is data available. ठीक है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जो है नोट कर लो, जहन में रख लो. जब हम लैब नंबर 9 के अंदर दैट इज़ रिलेटेड विथ DML ऑपरेशन, तो वहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करना भी सीखेंगे कि किस तरह से डेटा इंसर्ट कराते हैं. वहाँ पे हम इस चीज़ को दोबारा से डिस्कस करेंगे. ओके, सो the third operation we have completed, which is how to change or modify the data type or size of an attribute.
Next operation related with alter command is rename a column. So using alter command you can rename an existing column. Rename an existing column means अगर एक कॉलम ऑलरेडी अवेलेबल है किसी नाम से और आपको जो है वो याद आ गया कि ये नाम सही नहीं है, बजाय इसके कि उसे पूरे टेबल को रिमूव करके फिर से हम क्रिएट करें दूसरे न्यू नाम से उस एट्रीब्यूट को, हम यहाँ पे डायरेक्टली हम उस कॉलम का नाम जो है दोबारा से रीनेम कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्टर कमांड एंड रीनेम column keyword. So here is a syntax: alter table name, then change column is a keyword, old name space new name, then data type of new attribute. So here is an example. I am just copying this example and pasting in my SQL workbench. So alter table statement is used, and alter is a DDL command. Patient is an existing table name. Here change column is a keyword. So by using change column keyword you can change the existing attribute name with new attribute name. When you are going to change the existing attribute name, you can even at that time change the data type of attribute as well as size of an attribute. So old attribute name is address and the new attribute name is now location, and its data type is varchar and size is set as 20. So just select this query and click on execute button. So query has been executed successfully, and if you want to verify, you can verify using describe command. Just click on describe command. So now address is changed in location and the size of this attribute is now 20. I think previously size हमने 200 और फिर 300 की थी, but now the size is just 20 characters. Okay, so by using alter command you can even change the name of an attribute, name of an existing attribute in a table. So we have completed an operation of what? We have completed the operation that how to change the name of an existing So we have performed another operation by using alter command. The operation is how to change the name of an existing attribute in a table. And another operation that is drop a column. That how you can drop a column. For example, if you are analyzing that this attribute is an extra attribute and you want to remove that attribute, then you can do it by using alter command. So alter command can also be used to drop or remove a column, remove columns following the syntax: alter table, then table name, then drop keyword. After drop keyword you have to just specify the name of column. As here is an example: alter table patient, drop, and we are going to drop the column address. So we are performing this example practically in MySQL workbench. So alter table patient, drop address. Address is available, sorry, address is not available because we have changed the address attribute into location.
So we are going to just drop DOB1. Here is an attribute and DOB1. So we are going to drop this attribute. So drop DOB1. Sorry, DOB1. Just select the query and click on execute button. A query has been executed successfully. So if you want to check the effect, just use the describe command that DOB is removed or not. So now DOB1 is not available anymore in this table. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? Even you can draw multiple columns by using alter command along with drop keywords. But if you want to remove multiple columns, then again you have to specify drop keyword with each and every attribute. For example, I am going to drop father name and mother name attributes from existing table. So alter table, and the name of table is patient, drop father name, comma, drop mother name and terminator. So just select this query and click on execute button. So there is no any error. It means this query has been executed successfully. And if you want to check the effect, execute the describe command. Now father name and mother name attributes are no more available in this table. ठीक है, तो आप लोग एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम भी रिमूव करा सकते हो बाय यूजिंग अल्टर कमांड. सो यहाँ पे लैब के अंदर भी है दैट हाउ टू ड्रॉ मल्टीपल कॉलम्स. So till now we have completed the alter command and all the operations related with alter command. The last operation was how to remove an existing attribute from an. So we have performed all these 5 operations by using alter command. Again, I am summarizing the alter command. So by using alter command, you can add single or multiple columns to an existing table. By using alter command, you can set the default value for an attribute to an existing table. By using alter command, you can change or modify the data type or size of an attribute. By using alter command, you can change the name of an existing attribute in a table. By using alter command, you can remove the attribute, or you can remove the single attribute or multiple attributes from an existing table. Here I have written how to remove an existing attribute. Or multiple attributes from an existing table. So till now we have completed 2 DDL commands, which are create command and alter command. So now we are moving to drop command. So drop command is used to delete an existing SQL database
or its objects. So drop command is again used for so drop command is again used for two purposes. The first purpose is to drop a database. You can drop a database, or even you can drop database objects as well. So if you want to drop a database, then all the tables available in that database and all the data will be removed by default. But if you want to remove an existing object, then just that object will be removed from database, but other objects in database will remain over there. So drop database command is delete a database. Drop database command is used to drop or remove SQL database following the syntax. Syntax is drop, then database keyword, then the name of database. So here is a note: be careful before dropping a database. Deleting a database will result in loss of complete information stored in that database. Complete information means all the tables and all the data available in those tables will be dropped, or we can say will be removed from MySQL. So be careful when you are going to drop a database. So we are not going to drop database this time. At the end we will drop database. So till now we have performed drop command, not practically but theoretically, and drop command is also used to delete a table. So now we are going to delete, you can say remove a table from database. So syntax is drop table, then name of the table. तो हम टेबल ड्रॉप करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि टेबल क्रिएशन की क्वेरी अवेलेबल है, हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं. So command is drop. Drop is a DDL command. Then specify the keyword table. Then specify the user defined table name which is existing in a database. And in this lab our database is a hospital and a single table is only patient. So just select this query, click on execute button, drop table patient, 0 rows affected. If here is a green signal, green tick, it means query has been successfully executed. Just right click on left pane and refresh all. Now you are seeing that there is no any object available in tables. ठीक है, तो पेशेंट टेबल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है. ठीक है. Even you can drop multiple tables by using single drop command. Then you have to just specify the command. For example, like patient comma patient 1. For example, if we have two tables with name patient and patient 1 and we want to remove both these two tables, then drop table patient comma patient 1. When you execute this query, then both these two tables will be dropped from the database. Okay, so we are going to create table again ताकि बाकी ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकें. So now table is again available under tables heading. So we have completed drop command in DDL commands. So drop command is used for two purposes.
you can drop an existing database you can drop database object as well. Here database object means table. ठीक है. So we have completed drop DDL command. Even though we haven't dropped database, तो जैसे मैंने कहा कि फिलहाल हम डेटाबेस को ड्रॉप नहीं कर रहे, डेटाबेस को हम लास्ट में ड्रॉप करेंगे. And the next DDL command is truncate command. As I have already told, the truncate command is used to delete complete data available in a database in a table. So the truncate table command deletes the data inside a table, but not the table itself. It means structure of table will remain over there. So syntax is truncate table, then the table name. So rename. Okay. So here truncate table, we don't have any table which have data, so we are not using truncate command. यहाँ अगर हमारे पास कोई ऐसी टेबल हो जहाँ पे सो फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर डेटा अवेलेबल हो, क्योंकि हम एच आर को फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एच आर के अंदर जो डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर तो हम काम करते हैं, तो उसकी डेटा फ़िलहाल डिलीट नहीं करेंगे. जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे फिर हम जो है ड्रॉप कमांड वहाँ पर भी ट्रंकेट कमांड वहाँ पे भी दोबारा यूज़ करेंगे. दैट हाउ we can use truncate command to remove or drop all the data from an existing table. So till now, just understand that you can use truncate command to remove all the data available in a table. So command is truncate, then table keyword, then the name of table like patient. So at this point patient don't have any data, so डेटा डिलीट ज़ाहिर है डेटा रिमूव नहीं होगी, लेकिन अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो क्या होता है चेक कर लेते हैं. सो देयर इज़ नो एनी इफेक्ट, क्वेरी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, बट इसके अंदर डेटा है ही नहीं तो हम कोई चीज़ वेरीफाई नहीं कर सकते. बट यू कैन यूज़ ट्रंकेट कमांड लाइक दिस वे. Okay, so we have also completed truncate command. So truncate command is used to remove whole data from an existing table, but remember that truncate is a DDL command which is also known as permanent command. If you have executed this, you cannot roll back this transaction. It means अगर एक दफ़ा डेटा डिलीट हो गई तो वो डिलीट हो गई, वो ऑटो कमिट हो जाती है, मतलब सेव हो जाती है. उस डेटा को आप लोग दोबारा रोल बैक नहीं करा सकते. फिर हम वन बाय वन जो है रिकॉर्ड दोबारा से ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम रोल बैक नहीं कर सकते. ये चीज़ ज़हन में होनी चाहिए, बिकॉज ऑल दीज DDL कमांड्स आर नोन एज परमानेंट कमांड्स. वंस एग्जीक्यूटेड the changes has been saved in a database permanently. Okay, so now last command is rename command. So the rename command is used to change the name of an existing database object like table. टेबल का नाम चेंज करना है तो आप लोग जो है
रीनेम कमांड यूज़ कर सकते हो. इवन यू कैन change the name of column by using rename command as well. Renaming a table does not make it to lose any data it contained within it. तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि उसके अंदर डेटा अवेलेबल है और हम उसका नाम चेंज करना चाहें तो क्या डेटा लॉस होगी? तो डेटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेटा एज इट रहेगी, जस्ट नेम जो है वो चेंज हो जाएगा. द सिंटैक्स इज रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम टू इज अ कीवर्ड देन न्यू टेबल नेम. तो हम चेंज करके चेक कर लेते हैं. So there are two methods to change the name of a table. पहला मेथड ये है, हम सबसे पहले पहला मेथड यूज़ कर लेते हैं. I am writing command here using first method to rename a table. In first method, rename command is used. Rename table, then table name. Rename table, then old table name. You can say current table name. The current table name is patient. Make sure that the spelling is correctly written. Patient. Then to is a keyword. Then new table name. Now I am renaming patient table into doctor. So rename is a DDL command. Then table is a keyword. Then this patient is the old table name. To is a keyword and doctor is a new table name. So just select this query and click on execute button. So query has been executed successfully. Right click in left pane and click on refresh all. So patient is now renamed as doctor. ठीक है, तो बात समझ में आ गई. तो ये पहला तरीका था और एक दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से भी हम चेंज कर लेते हैं. नाउ यूजिंग सेकंड मेथड टू रीनेम अ टेबल. सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड के अंदर अल्टर टेबल ओल्ड टेबल नेम rename to new table name. So here rename command, here basically alter command is used. Then rename to is used as a keyword. So alter command is basically used, or we can say basic command is alter command. So alter table, then old table name is now doctor. Rename to new table name. Now let's suppose a new table name is on doctor 1. Or we can say ward, क्योंकि हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें हैं. तो डॉक्टर पेशेंट हो गया. अब हम टेबल का नाम जो है वो वार्ड सेट कर रहे हैं. सो अल्टर टेबल डॉक्टर, देन रीनेम टू इज अ कीवर्ड, देन न्यू टेबल नेम इज नाउ वार्ड. सो जस्ट सेलेक्ट द क्वेरी एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन एंड राइट क्लिक within the area of left pane. Now doctor is renamed in ward new table name. ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स आप लोग यूज़ कर सकते हो टेबल का नाम चेंज करने के लिए. अच्छा, टेबल का नाम तो हमने चेंज कर लिया,
क्या हम जो है वो कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं? सो यस, हम कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉलम का नेम चेंज करने के लिए आप लोग रीनेम कमांड के साथ किस तरह से जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्यूरी लिख रहा हूँ क्योंकि लैब के अंदर वो क्यूरी है नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली वहाँ पे लिखा हुआ था यू कैन चेंज द नेम ऑफ टेबल और कॉलम बाय यूजिंग रीनेम कमांड। सो रीनेम, अच्छा इस वर्ड के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। डिस्क्राइब वर्ड, so the attributes are id, name and form. Okay, now we are going to change the name of attribute by using rename command. So rename table, rename table, old column name is name, then keyword will be used like change column, or maybe I am wrong, चेक कर लेते हैं। चेंज कॉलम टू न्यू एट्रीब्यूट नेम इज लाइक पी नेम, और उसका डेटा टाइप भी सेट कर लेते हैं वाचा 20। change column, it shows error, it means that this query is not correctly written। rename table, टेबल का नाम में से, तो टेबल का नाम हम रख लेते हैं रीनेम टेबल पेशेंट, चेंज कॉलम नेम टू, नहीं ये भी सही नहीं है, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, ये मैंने परफॉर्म किया हुआ था। सॉरी, रीनेम कमांड यूज नहीं होगा, अगेन अल्टर कमांड ही यूज होगी। सो अल्टर टेबल पेशेंट चेंज कॉलम नेम टू पी नेम। चेक करते हैं, हम टू यूज नहीं कर रहे, क्या ये परफॉर्म हो रहा है? नो, देयर इज एन एरर। एरर क्या है? सॉरी, टेबल नेम इज नॉट पेशेंट बट इट्स नाउ वार्ड। The query has been executed successfully. Just verify that name has been changed or not. So execute describe command. Sorry, the name of table is now word. Okay, so now name is changed into p name. So if you want to change the name of an attribute by using rename, or we can say renaming concept is used. So alter table word, change column name to p name, and specify the size of an attribute. So till now we have completed all these 5 DDL commands। rename भी हमने complete कर लिया,
यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो ड्यूरिंग द लाइव सेशन. And here is exercise. So using implies table, solve the following queries. First query is create a replica of implied table with all the records in it. It means कि implied table का एक replica table आपने create करना है जिसके अंदर data भी available हो. Second query is add a column address in it. Address के नाम से एक column उस replica table के अंदर आपने add कराना है. Third query is drop column address from it. Fourth is add columns house number, character, street number, numeric, area, city. In these columns you have to add these columns by using single query. And the fifth task is change the data type of house number from character to numeric. And the sixth task is related with creation of tables. Here are four tables: faculty, course, class, and student. And the attribute names are specified along with their data types as well as size. So you have to create these four relations. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, प्राइमरी की और फॉरेन की भी जो है वो स्पेसिफाई की गई है. ठीक है. और उसके बाद उन्हीं फोर रिलेशंस के ऊपर यहाँ पे कुछ क्यूरीज हैं जो आप लोग उन टेबल्स के ऊपर अप्लाई करोगे जो आपने क्रिएट की होंगी. अच्छा, हियर इज द प्राइमरी की एंड फॉरेन की. तो अगर आप लोगों को ये समझ में ना आए, क्योंकि प्राइमरी की तो ऑलमोस्ट हमने क्लास के अंदर भी जो है वो परफॉर्म की होगी, तो वो आप लोग क्रिएट कर सकते हो. इवन वी है practically performed in theory classes that how we can use a foreign key or apply foreign key in a table. यहाँ आप लोग जो है वो कहीं से देख लेना, या समझ में ना आए तो आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो ड्यूरिंग लाइव सेशन. Okay, so I hope that lab number 7 is now completed. All the things we have discussed and we have performed practically. So now it's time to end the session. Allah Hafiz.